अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम सब इक्विपमेंट इम्पेचमेंट सिंड्रोम पर बात करेंगे। इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है कि इम्पेचमेंट सिंड्रोम जो है इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। एक्सटर्नल इम्पेचमेंट, इंटरनल इम्पेचमेंट, इंटीरियर इम्पेचमेंट, पोस्टीरियर इम्पेचमेंट, ये तमाम की हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इन तमाम इम्पेचमेंट में कौन से स्ट्रक्चर जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह हम इसकी etiology के बारे में भी बात करेंगे और etiology के साथ साथ इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उस पर डिटेल से हम बात करेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इसके पीछे होती हैं कि ये इम्पेचमेंट सिंड्रोम क्यों होती है। तो इसकी जितनी भी ये बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट से हम बात करेंगे, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज के एस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि सब इम्पेचमेंट सिंड्रोम जो है किस तरह होती है। तो इनिशियली हम सिंपल इम्पेचमेंट की बात करेंगे एंड उसके बाद हम स्पेसिफिकली जाएंगे सब इक्विपमेंट की तरफ। उसके फिर हम एग्जामिनेशन पर बात करेंगे, स्पेशल टेस्ट विच आर यूज्ड टू ट्रीट टू एग्जामिन एंड डायग्नोज द सब इक्विपमेंट इम्पेचमेंट सिंड्रोम। और फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत उसकी बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेचमेंट इन द शोल्डर रीजन। Shoulder impingement syndromes, they can be broadly divided into external and internal types. अब internal and external का आसान अल्फाज में फोकस तो बहुत एक्सप्लेनेशन और टाइप्स इसके डिफिनीशंस आ रही है। आसान अल्फाज में ये है कि एक्सटर्नल इम्पेचमेंट हम उसको कहते हैं कि जिसमें शोल्डर जॉइंट यानी जो शोल्डर जॉइंट की जो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की जो कंपोनेंट है, जो कैप्सूल के अंदर स्ट्रक्चर्स है, वो अगर इन्वॉल्व है, सो दैट इज इंटरनल इम्पेचमेंट सिंड्रोम। कि जिसमें ग्लिनाइड केविटी जो है या ग्लिनाइड रिम जो है ये इन्वॉल्व होती है, उसको हम इंटरनल इम्पेचमेंट सिंड्रोम कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल इम्पेचमेंट सिंड्रोम उसको कहते हैं कि जो ग्लेनिहिमरल जॉइंट जो है ये फायर होती है, यानी हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल इम्पेचमेंट में होती हैं वो एक्रूमियन हो सकती हैं, कोरकाइड प्राइसिस हो सकती हैं, अनलाइक द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द इंटरनल इम्पेचमेंट सिंड्रोम जहाँ पे ग्लिनाइट की जो रेम है ये इन्वॉल्व होती है। तो ये इसके पे फर्दर पे टाइप्स है कि जी जो इंटरनल है इसकी भी इंटीरियर और पोस्टीरियर है और एक्सटर्नल की भी जो है इस तरह होते हैं। सो इंटीरियर और पोस्टीरियर एक अलग क्लासिफिकेशन है। इंटीरियर का मतलब ये है कि जो इंटीरियरली बॉडी की इंटीरियरली, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो सब इक्विपमेंट सिंड्रोम है, सो ये इंटीरियरली होता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे इंटरनल इम्पेचमेंट सिंड्रोम की बात करें जो एक्चुअली एक्सटर्नल रोटेशन में होती है, जो अक्सर थ्रोअर्स में होती हैं, पिचर्स में होती हैं, वहाँ पे जो है ये ग्रेटेड ट्यूब्रोसिटी जैसी और द पिचर है या थ्रोअर है, ये जब 90 डिग्री एबडक्शन पे चला जाता है और फिर एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन पे जाता है तो उसकी ग्रेटेड ट्यूब्रोसिटी जो है ये पोस्टीरियर चले जाती है। एंड एट दैट टाइम देयर इज चांसेस ऑफ बोथ supraspinatus, infraspinatus to be impinged between the tuberosity and the glenite rim. So that's why that is the internal impingement syndrome as well as the posterior impingement syndrome. दूसरी तरफ जो यहाँ पे सुपरस्पाइनेटस इम्पेंज होती है बिलो द एक्रोमियन, so that is not only the external impingement syndrome but it is also known as the interior impingement syndrome. So external impingement तो हमने डिस्कस किया, that result from abnormal contact between the humeral head and extra articular structures such as the acromion or the coracoid pouches, thus leading to the subacromial or subcoracoid impingement, यानी उसमें ग्लिनाइड रिम जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता। ऑन द अदर हैंड इंटरनल इम्पेचमेंट जो है विच कॉमनली अफेक्ट द ओवरहेड थ्रोअर्स एथलीट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, पिचर्स हो गए, थ्रोअर्स हो गए, इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर्स लोकेटेड बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड द ग्लिनाइड। तो ग्लिनाइड रिम जो है, जो बोनी पार्ट है, दैट इज द external boundary of that glenite cavity that is actually involved. So if that humeral head and intra-articular structures, it is internal. If there is the humeral head and the extra-articular structure, so that will be the external impingement syndrome.
और फिर इन दोनों को फिर हम एंटीरियर पोस्टीरियर जो है इसमें डिवाइड करते हैं. So posterior superior and anterior superior, these are the types of these internal impingement syndrome. Concern the posterior supraspinatus and anterior infraspinatus tendon as well as the adjacent capsule and bursa, while the anterior superior they concern the subscapularis tendon and the interior humeral head with the anterior superior glenoid and labrum during the forward flexion of the arm. So यहाँ पे थोड़ी सी जो इनमें स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है ये भी आप जहन में रखनी चाहिए. posterior superior में obviously the सुपरस्पाइनेटिस का जो posterior part है क्योंकि posterior impingement है, so that's why the posterior part of the supraspinatus as well as the infraspinatus का interior impingement ये दोनों involve होती हैं, जबकि interior superior में वहां पर subscapularis tendon और then interior humeral head with the interior superior glenoid involve होती हैं. So these are the different types of shoulder impingement. हम उसकी causes discuss करेंगे and then उसकी specific characteristic बात करेंगे. सबसे पहले we will talk about the interior subacromial impingement. अब जैसे हमने start में बात की subacromial impingement जो है इसको हम interior impingement भी कह सकते हैं, इसको हम external impingement भी कह सकते हैं. What are the possible causes of this subacromial impingement? This is the soft tissue that filling the subacromial space जिसमें बर्सा होती है, the supraspinatus tendon, specifically the bicep tendon, a long bicep tendon, are chronically entrapped between the humeral head and the coracoacromial arch. What are the that hallmarks of that subacromial impingement? So these are the near described a three-stage progression from impingement to the rotator cuff tendon here. And there are several variations of this subacromial impingement syndrome. Its treatment that is the anterior acromioplasty has been shown to have good result in the treatment of this subacromial impingement syndrome. The other type of shoulder impingement syndrome is the posterior superior glenoid rim impingement, and there is actually the compression of the inner fibers of the rotator cuff, specifically the posterior part of the supraspinatus and the interior part of the infraspinatus, and the fibers of the posterior superior labrum between the great tuberosity and the posterior superior glenoid. This posterior superior glenoid rim impingement is also known as the internal impingement syndrome, and this is one type, as we discussed in the previously, that the internal impingement they can be divided into posterior superior or the interior superior impingement syndrome. There is a situation between the repetitive motion and impingement syndrome, and that has been seen in patients involved in the throwing sports, top level water polo players, forklift drivers also seen with the condition, and all other condition in which there is shoulder abduction and external rotation involved. That may be the throw in the cricket, there may be the juvenile throw, there may be the any sports involving the throwing, overhead throwing. So तमाम athletes जो हैं इसके लिए they are very prone towards this posterior superior glenoid rim impingement syndrome. The other impingement syndrome is the subcoracoid impingement syndrome, and that results from the posterior elevation of the humerus in a plane of 30 degrees from the pram combined with the internal rotation. This is another type of the external impingement syndrome, and the continuous contact between the coracoid tip and most prominent part of the lesser tuberosity, and surgical intervention is required, but mostly it can be treatable without any surgical intervention. The nerve impingement syndrome, the previous three which we have discussed, all of them they have the tendon as pathological structure, but and there is also nerve impingement syndrome in the shoulder region, and the suprascapular nerve impingement syndrome, in which the cause is the encroachment of the suprascapular nerve. And what are the other characteristic of this? That there is calcification or the hypertrophy of the splenoglenoid ligament, and this is that ligament which is actually converting that notch into tunnel through which this suprascapular nerve passes towards the scapula, the rotator cuff muscles. So there is calcification or the hypertrophy of this glenoid ligament,
and due to that there is compression of the nerve between this ligament, because of the thickness of that ligament and because of the hardness of that ligament, there is compression of this suprascapular nerve. So as well as there is increase in the nerve angulation, और चूंकि जब ये नर्व निकलता है इस नॉच से तो ये मसल की तरफ थोड़ा सा जो है एंगल ले लेता है. So there is enhancement of that angulation of that nerve towards that infraspinated fossa. So these are the most common characteristic of this suprascapular nerve syndrome. We can see here, this is the transverse scapular nerve, and this is actually the sphenoglenoid ligament just below that spine of the scapula. So this is the suprascapular nerve, which is just coming through this ligament. Along with there is also suprascapular artery that is coming through this notch. And if this ligament is removed, this is a notch. And because of this ligament, this notch is converted into a tunnel. Like the transverse scapular ligament, this is a U-shaped tunnel through, and there is actually the nerve just passed through this tunnel, but the artery just passed superior to that ligament. But in that sphenoglenoid canal, there are two structures, both the suprascapular nerve as well as the scapular artery. They pass through this canal, and this is the angulation. We can see here the nerve is coming like here, and then there is that it take turn towards that infraspinatus muscles. Whenever there is impingement of the suprascapular nerve at the sphenoglenoid level, the only problem to then that is towards the infraspinatus, because the branch for the supraspinatus that they just come out just above the spine of the scapula. So whenever there is compression, there is nothing wrong to the innervation of this muscle, and only the innervation to the this muscle that is being disturbed. We can see here there is, if there is calcification or the hypertrophy or thickness of this ligament, so there is compression of this nerve in this canal, and because of that, that may take more turn toward this as muscle. And these two are the characteristic of this suprascapular nerve impingement syndrome. This is the example of the posterior impingement syndrome. Subacromial impingement syndrome, shortly it will be considered as SIS in the upcoming slide, and this is the topic of interest in this session. So it is the clinical external impingement condition, as we discussed previously, characterized by the chronic anterior shoulder pain associated with limited range of motion. आगे जाके हम इसकी फिर टाइप्स डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो इम्पेजमेंट सिंड्रोम है सबएक्यूमियल, अदर देन ये जो हम इंटीरियर पोस्टीरियर और इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा इसकी एक और क्लासिफिकेशन है, द प्राइमरी सबएक्यूमियल इम्पेजमेंट सिंड्रोम एंड द सेकेंडरी सबएक्यूमियल इम्पेजमेंट सिंड्रोम. इस पर भी हम बात करेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चरल इम्पेजमेंट सिंड्रोम एंड फंक्शनल इम्पेजमेंट सिंड्रोम भी कह सकते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेजमेंट सिंड्रोम या प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी हम आगे स्लाइड्स में शर डिस्कस करेंगे. So there is actually characteristic of this SIS is there is anterior shoulder pain, and there is also some limitation of the range of motion, specifically the pain that increases, that enhances in intensity whenever the patient is going to elevate the shoulder with internal rotation. If there is no internal rotation and no elevation, the patient may don't have any such pain, but as the patient elevates the shoulder and do some internal rotation, at that time there is more compression of this nerve under the acromion, and that's why this condition is known as the subacromion, which means below the acromion. In some literature, it has been termed as the suprahumeral impingement syndrome as well, because actually the space जहाँ पे ये बरसा होती हैं, जहाँ पे लॉन्ग टेंडन ऑफ द बाइसेप होती हैं, जहाँ पे ये सुपरस्पाइनेटस टेंडन होती हैं, तो ये न सिर्फ ये कि ये एक्रूमेन के नीचे होते हैं, बल्कि ये सुपीरियर टू द ह्यूमरल हेड भी होता है. सो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है, उस स्पेस को सब एक्रूमेन स्पेस भी कहा जा सकता है एंड सुपरह्यूमरल स्पेस भी कहा जा सकता है.
सो इस लिहाज से इसको हम सुप्रा ह्यूमरल इम्पेचमेंट भी जो है कह सकते हैं. Subacromial impingement syndrome results from the irritation of the tendon of the rotator cuff muscle, specifically the supraspinatus tendon, in the subacromial space, and may be due to an increased upward pulling force on the humerus and a scapular malposition. So we will discuss this alteration in the force couple as well, and this is actually one of the reasons behind the subacromial impingement syndrome. The subacromial space that lies between the coracoacromial arch above the humeral head and greater tuberosity of the humerus below it contains the rotator cuff tendon, the long head of the bicep tendon, the shoulder joint capsule, the glenohumeral ligament, the coracohumeral ligament, and the subacromial bursa. The rotator cuff tendon, that is actually the specifically the supraspinatus tendon, and this supraspinatus tendon and the subacromial bursa, they are the two common structures which usually impinge when usually compressed under the acromion in this space. So थोड़ी सी बात करते हैं कि इम्पेचमेंट सिंड्रोम जो है ये जो सब इम्पेचमेंट सिंड्रोम इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह जो है इसकी ये जो नाम इसको कब किया गया और किस किस की कंट्रीब्यूशन है इस कंडीशन में. तो सबसे पहले 1934 में कॉर्डमैन जो है इसने इस पैथोलॉजी को डिस्क्राइब किया इस इंटरनल इम्पेचमेंट सिंड्रोम को. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉर्डमैन द ह्यूमरल हेड एंड द acromial impingement during the shoulder abduction was the cause of the rotator cuff region, and he suggested that the lateral acromioplasty would resolve the patient's symptom, but that was only in that case when it is the structural impingement syndrome, when the acromion, specifically the type 3 acromion, which is actually a hook acromion, and that is the cause behind that impingement syndrome. So then the lateral acromioplasty, that is actually the treatment for the this rotator in this rotator cuff impingement syndrome. That was the opinion of the Codman. Then in 1972, the Neer that used and then coined the term impingement syndrome, and he was of the opinion that impingement occurred laterally at the interior acromion and the coracoacromial ligament. According to him, the subacromial impingement syndrome of the shoulder is probably the most common disorder of the shoulder and accounts for about 38% of all shoulder complaints. Now, after in the modern literature, what is the subacromial impingement syndrome? Subacromial impingement syndrome, according to a study, it is a condition where the subacromial space, the area directly below the acromion process and above the shoulder joint has narrowed. So that's why there is a condition in which uh, there is narrowing of this space, and due to the narrowing of this space, there is impingement of the structure which is present in this space. So that it is also known as the external impingement syndrome or the interior impingement syndrome. And this is actually the reference to this statement, this definition. अच्छा, ये हर एक स्लाइड में इसकी नीचे जो है जहां जहां पे जरूरत होती है तो उसकी नीचे रेफरेंस जो है हर स्लाइड में अलग से दी गई है. So जहां भी रेफरेंस की जरूरत होती है, the reference will be present at the bottom of every slide. This can happen for several reasons. Traditionally categorized as either the primary or secondary causes, and because of these causes, the impingement syndrome can be considered as the primary impingement or the secondary impingement. Primary causes, they are the structure changes or the morphological precondition of the acromion process. Usually there is the when the shape of the acromion that is abnormal, and because of that abnormal shape of the acromion, there is impingement of the supraspinatus tendon. We can see here there are three types of the abnormal acromion process. This is the type 1, the type 2, and the type 3. The type 1 we can see here, this is the back, the wind, and the undersurface is just flat, and there is more space between the acromial head, and this is that the other part, the coracoid process. And this is the इस एरिया पे यहाँ पे ह्यूमरल हेड प्रेजेंट होता है. सो ह्यूमरल हेड और इसके दरमियान स्पेस जो है ज्यादा है. Then this is the another जहाँ पे जो अंडर सरफेस ऑफ द acromion जो है ये इस तरह कब होता है, एंड यहाँ पर भी जो है space between the humeral head and
the that equipment that is become less. But more importantly and more pathologically, a type 3 involved when it is hooked. We can see here the hook of the that equipment that is being increased. So we can just check the distance. This distance is more, that is being decreased, and that is further decreased. And that is actually the most common impingement syndrome caused. The type 3 are the hook acromion. The acromion process that hook almost no space like load of impingement increase. Secondary causes, they are sometimes also known as the functional causes or the functional impingement syndrome, and then depend on the multiple factors, including the rotator cuff syndrome, mean the strain or the tear of the tendon of the rotator cuff. Similarly, the reason behind the impingement is maybe the tendinosis or the tendonitis, which is inflammation or the degeneration of the tendon. Inflammation of the tendon is tendonitis, and the degeneration of the tendon is tendinosis. Combined, it is known as the tendinopathy. So, if the tendinopathy, that may be the cause behind this impingement syndrome, specifically in the supraspinatus or the infraspinatus, but it can be in the subscapularis. Similarly, if there is subacromial bursitis, the inflammation of the subacromial bursa, that may be the cause behind this impingement syndrome. Or the next, there may be the long head tendon of the bicep brachii can also be involved, but most commonly these are the tendonitis or the tear in the infraspinatus or the supraspinatus, and more specifically the supraspinatus. Subacromial impingement syndrome now includes a spectrum of the subacromial space pathologies. It means there is not a single disease, it is actually a group of disease जिसमें rotator cuff tears involved होती हैं and strain of the rotator cuff tendons. यहाँ पे calcification of the tendon, which and later on there may be inflammation as well. So that calcification induced inflammation, which we call as the calcific tendonitis. Similarly, the bicep long head tendon जो है ये भी involve हो सकती है bicep tendinopathy, specifically the bicep tendonitis. Similarly, the inflammation of the rotator cuff. So these tendinosis and tendonitis and the tear, they all are the rotator cuff tendon pathologies. Similarly, the bursa as well, the subacromial bursa. There are a number of bursa which are present in the surrounding of these shoulder joints. We will discuss in the next lecture in the subacromial bursitis. Among them, the most commonly pathologically involved bursa is the subacromial bursa. So we can say that shoulder subacromial impingement syndrome that is being described as a group of symptoms rather than a specific diagnosis. Now, one of the condition which is present, which accompanied the impingement syndrome, is the internal glenoid impingement, and actually this is present in those who are involved in the overhead activities, like in the pitchers, like in the water polo sports, like in the rugby players in which they throw the ball, like the throwers in the cricket. So all those sports in which there is overhead activity involved. एंड दैट्स वाई, बिकॉज जब हम ओवरहेड थ्रो करते हैं तो वहां पे हमारी जो ग्रेटर ट्यूब्रासिटी है ये लेटरल से पोस्टीरियर चले जाती हैं, एंड ड्यूरिंग द लेट कॉकिंग फेज ऑफ दैट थ्रोइंग व्हेन देयर इज एक्सेसिव एंड द मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन, वहां पे ग्रेटर ट्यूब्रासिटी दे हिट एंड दे abut the posterior superior glenoid rim, in which there is chances of the both tendon of the infraspinatus and the supraspinatus. So यहाँ पे glenoid involved होती हैं. That's why it is the internal impingement, and because of the glenoid, so it's commonly known as the internal glenoid impingement. And sometimes इस तरह भी हो जाता है कि that may be present in non-athlete population as well. जरूरी नहीं है कि हमेशा से ये athlete में होती हैं. And it is the main characteristic of this is there will be posterior shoulder pain, unlike the subacromial impingement syndrome in which there is anterior shoulder pain. That is caused by an impingement of the articular surface, the intra-articular of the rotator cuff.
the posterior edge of the supraspinatus and the anterior edge of the infraspinatus against the posterior superior glenoid rim and the glenoid labrum. So it should be noted that both the supra and infraspinatus they are involved, but the posterior edge of supraspinatus and the anterior edge of the infraspinatus. And which glenoid? That is obviously the posterior superior, specifically between that 9th or 10 to 12 o'clock position. As we have discussed this condition, the internal impingement or the internal glenoid impingement that is most commonly seen with the athletes which have involved in the repetitive overhead activities. There is pathologic during excessive external rotation, interior capsule instability, scapular muscle imbalance, and upon repetitive overload of the rotator cuff musculature. So that was just discussion of the that internal impingement syndrome, but our topic is the interior impingement, the external impingement, or the subacromial impingement syndrome. So now we will discuss the etiology of the subacromial impingement syndrome. Subacromial impingement syndrome is a multifactorial condition, और why it is multifactorial? Because इसमें ग्रुप ऑफ पैथोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसकी पीछे जो रीजन हो सकती हैं और रोटेटर कफ टेयर हो सकती हैं और रोटेटर कफ टेंडनाइटिस हो सकती हैं, बर्साइटिस हो सकती हैं, इसके अलावा बाइसेप टेंडनाइटिस हो सकती हैं, सो एक्रोमियल स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मल शेप हो सकती हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन, और इसमें दोनों काजेस पर इन्वॉल्व होते हैं etiology में, द इंट्रिंसिक काजेस एंड द extrinsic causes. We will discuss them in the upcoming slide. Similarly, there are several theories which describe the mechanism behind the subacromial impingement syndrome. That what is actually the patho mechanics of this subacromial impingement syndrome. So we will discuss two theories which will elaborate the pathomechanics of this subacromial impingement syndrome. It is still not clear that the damage to the interior cuff tendon lead to the impingement mechanism, which is actually the intrinsic mechanism, or the impingement causes the damage, which is known as the extrinsic mechanism. यानी पहले अगर impingement होती है और impingement जो है ये टेंडन को नुकसान पहुंचाती है, so this is extrinsic. लेकिन अगर टेंडन पहले इन्वॉल्व होती है और उस टेंडन की डैमेज की वजह से, टेंडनाइटिस और टेंडनोसिस की वजह से impingement हो जाती है, so that will be in the intrinsic mechanism. So it should be very clear, if the tendon is the cause of the subacromial impingement, this is intrinsic, and if the subacromial is the cause of the tendon damage, this is extrinsic mechanism. कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो बात करते हैं कि ये जो सुपरस्पाइनेटिस टेंडन की ज्यादा कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स पुअर वेस्कुलरिटी, क्योंकि इसकी जो इंसर्शन साइट है ये इसी जगह पर होती है जहां पर एक स्पेसिफिक एरिया होती है विच इज एवेस्कुलर एरिया, एंड दैट इज नोन एज द क्रिटिकल जोन. और रिसर्च, एक दूसरे रिसर्च के मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन द इंसर्शन एंड दैट क्रिटिकल जोन विच इज एवेस्कुलर एरिया, दिस इज जस्ट 1 सेंटीमीटर. Past researchers कहते हैं कि this is that varies from person to person, and in some cases that is much nearer, and in some cases it may be present at that the insertion is present on the critical zone. Overall हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो insertion area है towards that greater tuberosity, वहाँ पे because of this poor vascularity या because of that no vascularization at that area, that is actually the etiological factor behind the involvement of the supraspinatus in the subacromial impingement syndrome. So the supraspinatus tendon that mainly derives its blood supply from the interior circumflex humeral and suprascapular arteries. This is that suprascapular artery which just enter into that sphenoglenoid tunnel along with the suprascapular nerve. Near its insertion at the greater tuberosity, there is a avascular area which is known as the critical zone, which is usually where the tear originates. So intrinsic factors affect the tendon morphology and performance over time. These factors are influenced by the genetic predisposition. बिल्कुल इसकी मतलब यहाँ पे
जो जीन्स है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। के साथ साथ एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, पुअर विस्कोसिटी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, सम अल्ट्रेशंस एज वेल, एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बियॉन्ड द फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द रोटेटर कफ टेंडन आर सरपास्ड, यानी उसकी जो लिमिट है उससे अगर ज्यादा एक्टिविटी उस पर की जाती है, विच वी कैन टर्म एज ओवरलोड सिंड्रोम, यानी ओवरलोड उस पर उसकी जो लिमिट्स है उससे ज्यादा उस पर लोड आ जाता है, सो दैट मे बी द mechanism. So ये तमाम जो factors है, they can be considered as the intrinsic causes or intrinsic factors. Intrinsic factor, then they are related to the anatomical structure and the biomechanical alteration causing the mechanical compression. इन दोनों पर हम डिटेल से बात करेंगे कि what we mean by the anatomical structure, and then इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे the biomechanical alteration, इससे मुराद क्या है. So in anatomical structure से मुराद ये है कि this is actually the variation of the equipment shape जो हमने previous slide में discuss किया, and that is actually the most common cause of this impingement syndrome at that primary category. इसके अलावा इसकी जो anatomical structures जो इसके cause हो सकते हैं, these are the spurs on the subacromial and the acromial joint. So because of the arthritic changes, there may be the origination of formation of the spur on the subacromial, and these subacromial that just look like those hook shape acromion. In these both the spurs and as well as the variation, the abnormal variation of the acromion, there may be the anatomical causes, and they both are considered as the extrinsic factor of the anatomic aspects. The biomechanical alteration, and that means there is more translation of the humeral head in the superior direction, as well as there is some change and abnormal kinematics of the that scapulohumeral complex. Specifically, that when there is alteration in the biomechanics of that scapulohumeral kinematics, that is the most common cause in the category of that biomechanical alterations. We will discuss them in the detail. और ये जो superior translation of the humeral head ज्यादा होती हैं, या kinematics of the scapulohumeral complex जो है change हो जाती हैं, इसके पीछे जो main causes होती हैं, they are the rotator cuff tendon की weakness हो सकती हैं, या इनके दरमियान जो एक बैलेंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाए. So that imbalance between these tendon as well as the weakness of these tendon, that causes not only the alteration in the kinematics and the biomechanics of the scapulohumeral complex, but it also lead to the superior translation of the humeral head. Now we will discuss that how the alteration in the shoulder kinematics that is involved occurred, and how it is involved, and how it is causing the subacromial impingement syndrome. Alteration in the shoulder kinematics, they are often observed among the patient with the subacromial impingement syndrome. And the most common documented deficit, they are the alteration in the kinematics of the scapulothoracic joint. Similarly, the displacement of the humeral head within the glenoid cavity, and there is increased in the elevation and retraction of the clavicle in the sternocleidomastoid or the joint during the arm elevation. So different causes हो सकते हैं, like the trauma, rotator cuff dysfunction, tightness of the posterior capsule, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बहुत कॉमन होती हैं जिसकी वजह से जब ये posterior capsule टाइट हो जाती हैं, so पेशेंट की जो internal rotation है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, and that case when the internal rotation is become limited just because of the tightness of the posterior capsule, this condition is simply known as the GERD, the glenohumeral internal rotation deficit. Similarly, some post abnormalities in that cervico-scapular shoulder complex, as well as scapular dyskinesis, जो आगे हम discuss करेंगे, which involve the different types of dyskinesis, the type 1, type 2, or type 3. Similarly, if there is overload on these rotator cuff tendons, like the repetitive activity without any rest, or
if there is more and more activity without any warm up, or if there is lack of training and hence there is overloading the muscles, they are not trained, they are not ready for what the athletes or what the person is doing and what taking that activity from these muscles. So obviously it will lead to the pathological conditions. Similarly, the shoulder joint instability and the different degeneration of the different structures which are a common phenomena in the with the age. Scapular muscle weakness and dysfunction specifically यहाँ पे जो इंटीरियर मसल्स होते हैं, सेरेटस इंटीरियर मसल, उसकी वीकनेस जो है उसकी वजह से यूजुअली स्किपुलोडिस्किनेसिया होती हैं, और स्किपुलोडिस्किनेसिया जो है दिस में लीड टुवर्ड्स द इम्पीचमेंट सिंड्रोम. Imbalance between the concentrically activated agonist and eccentrically activated agonist. So ये जो imbalance between these partners, that may be the reason behind this subacromial fitness syndrome. Now, what are the signs and symptoms of this subacromial syndrome? There will be a split pain, a diffused pain over the interior side of the shoulder. There will be pain on the palpation of the subacromial space, as well as there will be pain on the palpation of the bicipital groove and the supraspinatus insertion as well. Active and passive range of motion both will be limited, and specifically, which is actually considered as the pathognomonic of the subacromial impingement syndrome, this is that the painful arc between the 60 and the 120 degree. It means कि अगर हम पेशेंट से कहें कि आप abduction करें, तो if the patient is having purely the subacromial impingement syndrome, तो there will be no pain up to 60. यानी यहाँ 0 से वो स्टार्ट करता है abduction, तो 60 तक there will be no such pain, और 60 के बाद उसको पेन शुरू होगा, और ये पेन जारी रहेगा जैसे 120 तक पहुंच जाता है, उसके बाद अगर ये 130 and more 180 तक elevation करेगा, so there will be no such pain. So actually the pain will be only present in the between the 60 and the 120 degree. So if this region, if there is pain only at this arc, that is then known the pathognomonic and the characteristic of the subacromial impingement syndrome. अगर 120 से यहाँ से ऊपर जो है सिर्फ पेन अवेलेबल है, 120 से नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो एसी जॉइंट है इसकी इंडिकेशन है कि जो इक्रोमिक्युलर जॉइंट इसके इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. इसी तरह अगर 60 डिग्री से नीचे अगर पेन आ रही है, so this that may indicate the problem in the supraspinatus tendon without any impingement. That may be the tear of the tendon, that may be the strain of that supraspinatus tear, or that may be the reason behind in the some internal problem with the shoulder. So specifically the subacromial impingement syndrome. Now, why there is pain in this condition? Because ये वही जो 60 से 120 पोजीशन है जहां पे स्पेस जो है ये बिटवीन द ह्यूमरल स्पेस एंड द ह्यूमरल हेड एंड द क्रूमेन जो है ये नैरो हो जाती हैं. नाउ इफ द स्पेस इज हेल्दी, सो बिकॉज जब हम एलिवेशन करते हैं तो 60 के बाद ये इस तरह कुछ शोल्डर के मूवमेंट के बाद स्किपुला भी मूवमेंट स्टार्ट कर लेती हैं. So if the superior translation during the elevation of the shoulder, ये ह्यूमरल हेड सुपीरियर ट्रांसलेटर होता है, तो वहां से क्रूमेन भी ऊपर चला जाता है, एंड हेंस देयर इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पेस, नियरिंग ऑफ द स्पेस नहीं होती. बट अगर यहाँ पे स्किपुलर मसल जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, या वहां पे स्किपुलर डिस्किनेसिया है, वहां भी फोर्स कपल फोर्स अल्ट्रेशन है, और जिसकी वजह से जो है ये स्पेस क्रूमेन ऊपर नहीं जा रही है, तो दैट्स व्हाई वहां पे क्या होगा, स्पेस जो है कम हो जाएगा एंड देयर विल बी इंगेजमेंट ऑफ द bursa एंड द टेंडन. लेकिन जैसी 120 के ऊपर चली जाती है, सो अगेन देयर इज डाउनवर्ड, यानी 120 के बाद जो स्टिल देयर इज दोबारा डाउनवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेस वापस इंक्रीज हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई इफ द पेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द टेंडन इन दैट नैरो स्पेस, स्पेस के वापस ओपन होने की वजह से पेन दोबारा गायब हो जाएगा. एक तो ये कंडीशन. दूसरा ये कि हम वहां पे अगर इसके साथ इंटरनल रोटेशन ऐड करें, तो इंटरनल रोटेशन से भी जो है वहां पे स्पेस जो है ये तो कुछ ज्यादा जो है नैरो हो जाएगा.
So because of that stenotic condition, they will be impingement of these two terms structure, specifically the subacromial bursa and the supraspinatus tendon, जिसकी वजह से the patient की pain जो है ये increase होगी. So this is actually the most important in the sub-equipment, that they will be bent up from 60 to 120 degree. इसी तरह there will be decrease in the strength of the external rotator compared to internal rotator. What are the external rotator? External rotator of the shoulder, they are the teres minor as well as the infraspinatus, while the internal rotator, this is the subscapularis. So mostly the strength the infraspinatus, that will be less as compared to the subscapularis. Tightness in the posterior and inferior capsule, specifically the posterior capsule, there will be more tightness, and because of that, there might be limitation in the internal rotation as well. So some of the characteristic of the pain, if the pain is present at the during the night when the patient is lying on the affected side, and there is also atrophy of this supraspinatus tendon, so that is an indication of the rotator cuff tear. Specifically, the most common tendon involved is the supraspinatus tendon. If the patient's age is less than 30 years, then the common causes behind this condition may be the biomechanical causes or inflammatory causes. But if the age of the patient is more than 45, and there is also some history of trauma, so there may be the causes the tear of the rotator cuff tendon, and that is almost present in the one third or more than one third of the such patients. If there is pain at that specific arc between the 60 and 120 of reduction, so obviously there will be subequilibrium impingement. And if the pain is present above 120 degree of the abduction, then there is more chances of the acromioclavicular joint involvement. If there is sketching, popping, or clicking again, that may indicate the joint arthritis or the tear in the labrum, shoulder labrum. These arthritis may be both shoulder, the glenohumeral joint arthritis, or the acromioclavicular joint arthritis. According to the knee, there are stages of the subacromial impingement syndrome. In the stage one, there will be edema, there will be swelling that shoulder joint, as well as there will be some bleeding, intra-articular bleeding, or in the area of that extra-articular, bleeding, as well as this condition, when it is in the stage one, so is there a decrease in the swelling and decrease in the hemorrhage, so there may be decrease in the symptom as well. So that is mostly reversible, and this mostly occur such stage one or this type of impingement occur more in the young athletes, just below showing age just below the 25 years. Sometimes there may be some fibrotic changes in the tendon injuries, जहाँ पे injury हुई है, as well as there is inflammation of the tendon as well. और patient जब activity करते हैं, so the pain reoccurred. Usually there is no such pain without activity when they are doing nothing. When the shoulder is in the neutral position, zero position, there may be no such pain, and this mostly occur in the age between 25 to 40 years. Uh, at the later stages, when the patient is living with this condition, there may be the construction and formation of the bone spurs, as well as there may be the complete tear of these tendons, and mostly that will lead to the severe disability. And this stage, they mostly occur among the patients who are in the 40 plus stage. So these three stages, the age is important. Stage one mostly occur at less than 25 years. The condition that lead toward the stage two in the later ages and the later years after 25, and then the stage three, they again progress to the three after when the patient lead to enter into the 40s and 50s. Similarly, NEER also classified the subacromial impingement into four types, and these are actually the type 1, the type 2, type 3, and type 4. And the characteristic of these is just like the stages. The type 1 is the patient will be
less than 25-year old, the type 2 age, there is mostly occur commonly among the patient who are at age between the 25 and 40-year old, while the type 3 and type 4, they both occur in the aged population when their age is more than 40 years. Usually, the type 1 is reversible, there is swelling, there is tendinitis, there may be no tears, and that can be treated through the conservative options like the physical therapy. The type 2, that is obviously there may be no tears, but there may be tendinitis, and there may be some scarring as well. And the subacromial decompression is the type of intervention for the type 2. Similarly, in the type 3, there is some tear as well, but small tear हो सकती हैं. Again, it can be very well treated with the subacromial decompression. And the type 4, as we discussed, this type 4, this also occurs in the patient whose age are the 40, more than 40 years old. As compared to type 3, the tear in the rotator cuff tendon will be large. In the type 3, the rotator cuff tendon tear that would be small, while in the type 4, there will be a large uh, tear in the rotator cuff tendons. And again, the subacromial decompression के साथ उसकी रिपेयर हो जाती है. नाउ ये जो हम टाइप 2 में, टाइप 3 में एंड टाइप 4 में ये वर्ड्स यूज हुआ है सबइक्रूमियल डिकम्प्रेशन. ये है क्या चीज, यानी व्हाट इज सबइक्रूमियल डिकम्प्रेशन? बेसिकली सब ये जो सब इक्विपमेंट डिकम्प्रेशन है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मुख्तलिफ मतलब वी कैन से दैट इवेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, लाइक द बर्सेक्टमी, द क्रोमियोप्लास्टी और द रिमूवल ऑफ द बोन्स पर. बर्सेक्टमी से मुराद ये कि जब वहां पे जो अगर बर्सा इन्वॉल्व होती हैं तो उसको कंप्लीट बर्सा को रिमूव किया जाता है. इसी तरह अगर इक्रूमियत जो है वो एबनॉर्मल शेप का होता है तो उसकी या तो रीशेपिंग हो जाती है या उसकी स्मूथ किया जाता है, उसको रीशेप किया जाता है, और स्पेसिफिकली इसका अंडर साइड ऑफ द इक्रूमियन. इसी तरह अगर इसमें टाइप 3 इक्रूमी के साथ अमूमन उसके स्पर्श जो है आ जाते हैं तो उस स्पर्श को रिमूव किया जाता है. तो इन तमाम कंडीशन में समटाइम देयर मे बी द एक्सेशन ऑफ द डिस्टल क्लेविकल एज वेल or the debridement of the rotator cuff tendon as well when they are required. So overall जो है इसमें ये तमाम इवेंट्स को कंबाइनली कहा जाता है द सब इक्विपमेंट डिकम्प्रेशन, और मोस्ट कॉमनली आजकल जो है इसको आर्थोस्कोपिकली किया जाता है. सो दैट सब इक्विपमेंट डिकम्प्रेशन में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिसमें मल्टीफैक्टोरियल काजेज अगर इसके हैं. सो दैट इज the best choice of treatment for the if it is the type 2, type 3 and type 4. Only the conservative treatment will work in the type 1. बाकी तीनों जो इसके type 2 है, 3 and 4 है, उसमें surgical intervention is the best choice जो है to treat the subacromial impingement syndrome. अब यहाँ पे हम इन अदर डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है पैथोमेकेनिक्स, जिसे हम कहते हैं पैथोमेकेनिक्स ऑफ द सबइक्रूमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जिसमें हम 3 इम्पोर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे. जो प्राइमरी पाथवे है, दिस इज द पोस्टीरियर कैप्सुलर टाइटनेस एंड द रोटेटर कफ इनसफिशिएंसी. इसी तरह इसके अलावा एक और काजेस भी हो सकती हैं, दैट इज द एनाटॉमिक एनोमलीज एंड द डिजेनरेटिव चेंजेस. इन तमाम को हम डिस्कस करके इसको फिर हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके एंड डिस्कस करेंगे कि हाउ देयर इज सबइक्रूमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम. तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर टाइटनेस की. नॉर्मल एब्डक्शन एलिवेशन जब होती है सो उसमें जो ह्यूमरल हेड होता है दैट रिमेन सेंटर and it rotates downward in the granite cavity while the scapula rotates superiorly around a horizontal axis. And there is also internal rotation of the scapula as well as there is posterior tilting of the scapula. Healthy rotator cuff tendon होता है, इसी तरह जो posterior capsule वो legs होता है and the axillary recess जो भी legs होता है and all the muscles around the scapula they are normal. तब जाके जो है वहां पे नॉर्मल एब्डक्शन या नॉर्मल एलिवेशन होती है.
Agar in case if there is something change or something, if the amenities occur in the scapular movement, जिस तरह हमने कहा कि स्किपुलर जो है ये आपको रोटेशन होती है, सिमिलरली इसकी पोस्टीरियर टेंडिंग, तो इन तमाम के अलावा स्किपुलर एब्नॉर्मेलिटीज या स्किपुलर मूवमेंट सही नहीं है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, या वहाँ रोटेटर कफ टेंडन एब्नॉर्मल है, यहाँ पे कैप्सूलर पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट है बिकॉज रेदर देन द लेग्स, या जो स्किपुला की मसल है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इन तमाम की वजह से देयर विल बी सबएक्यूट इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पैथोलॉजिकली प्रेजेंट होता है दैट इज द lacking of the relaxing situation of the posterior capsule, which we call is the titus, the posterior capsule titus, the PCT. These are the rotators, the upward and downward rotator of the scapula, just for that information that which muscles that actually are there for rotators. The three muscles, both in the upward rotation and the downward rotation, they actually work together. It means there is not a single muscle which is actually involved in the upward rotation, downward rotation. अगर हम trapezius देखें तो upper trapezius and lower trapezius they both act oppositely, यानी upper trapezius जो है ये shoulder को elevate करता है, जबकि lower trapezius जो है इसको depress करते हैं, नीचे लेके आता है। लेकिन जब रोटेशन की बात हो जाती है तो फिर इन दोनों में जो है एक ही काम होता है कि ये क्या करते हैं कि इस साइड पे देयर इज द अपवर्ड ट्रेपेजियस होते हैं, जबकि इस साइड पे यहाँ पे लिवेटर होता है, लिवेटर स्किपुला जो है, तो ये जो अपवर्ड जो अपर पार्ट ऑफ ट्रेपेजियस है ये इसको इलिवेट करता है, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को इलिवेट करता है, यानी इस एज को इलिवेट करता है। जैसे ये इलिवेट हो जाता है यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ ट्रेपेजियस चाहिए इस साइड को नीचे डिप्रेस कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे सेरेटस इंटीरियर होता है, ये इस एरिया को इस डायरेक्शन में लेके जाता है। इसी तरह इनकी अगर हम इसको इस तरह टिल्ट कर ले तो द स्किपुला विल बी लाइक इन दिस पोजीशन एंड दैट इज एक्चुअली द अपवर्ड रोटेशन। सो इन जो तीन मोमेंट है the A, B, C, यानी there is an upward direction, in downward direction, and from the lower edge जो है यहाँ पे इसकी एंगल जो लोअर एंगल इसको ऊपर जो है लिया जाता है by the serratus anterior, and the end result is the upward rotation. The opposite मोमेंट तब होती है जब यहाँ पे पेक्टोरस माइनर जो है ये इसको नीचे लेके आते हैं, जिस तरह अपर ट्रेपेजियस को ऊपर लेके गए थे, तो यहाँ पे पेक्टोरल स्पाइनर इसको नीचे लेके आते हैं। इसी तरह जो मसल्स जो लोअर ट्रेपेजियस को नीचे जिस तरह डिप्रेस किया था, तो उसकी अपोजिट यहाँ पे लिवेटस की पुलाई विच इज इन्वॉल्व एट दिस एरिया। अब लिवेटस की पुलाई और अपर ट्रेपेजियस ये दोनों जो है ये एलिवेटर्स ऑफ द शोल्डर है, लेकिन जब रोटेशन की बात आ जाती है तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। सिमिलरली अपवर्ड एंड अपर ट्रेपेजियस एंड लोअर ट्रेपेजियस ड्यूरिंग द श्रैगिंग ऑफ द शोल्डर में ये दोनों अपोजिट होते हैं, लेकिन जब रोटेशन की बात आ जाती है तो ये दोनों फिर सिमिलरली इन्वॉल्व होते हैं एक एक्शन में, अपवर्ड रोटेशन। तो जो सेरेटस इंटीरियर ने जो काम किया था वो यहाँ पे रम्बाइड्स कर देते हैं, इसको वापस लेके आते हैं, यानी जिससे हम एक दूसरे की ब्लेड को करते हैं ना, जिससे हम ये मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग द रिट्रैक्शन, सो रम्बाइड उसको रिट्रैक्शन करेगा और इसको वापस लेके आएगा। सिमिलरली जो एलिवेटर्स की पुलाई है ये जो डिप्रेशन हुआ था यहाँ पे लोअर ट्रैप का वो वापस इसको एलिवेट करेगा, और यहाँ पे जो पेक्टोरस माइनर है उसको जो एलिवेशन कास हो गई थी बाय द अपर रोटेटर उसको वापस नीचे लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये कि मसल अपनी एक्शन वही करते हैं जिनका ओरिजिनल होता है, but actually they work together and they work synergically to have that upward rotation or the downward rotation. These are actually the movement you already know that what we mean by the downward rotation, upward rotation. So ये जो actually रम्बाइड्स कर रहा था, सो दैट वाज द डाउनवर्ड रोटेशन, और ये जो वहां पे सेरेटस इंटीरियर कर रहा था दैट इज एक्चुअली द अपवर्ड रोटेशन। Now the another moment which is actually used in the assessment of this internal this subacromial syndrome
और यूजुअली ये लिमिटेड होता है इंटरनल रोटेशन, सो इसलिए इसको असेस करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज नोन एज द RUBTB, और द रीचिंग अप बिहाइंड द बैक मोमेंट। सो और इसमें तीन मोमेंट्स होती है, इसमें ऑब्वियसली शोल्डर की एक्सटेंशन होती है, फिर इसमें इंटरनल रोटेशन होती है, और फिर इसमें जो शोल्डर की फ्लेक्शन होती है, इन और साथ साथ जो है ये सारी एल्बो की फ्लेक्शन होती है। और एल्बो की फ्लेक्शन इसलिए कि जब इंटरनल रोटेशन होती है तो बिग थंब को उसको शोल्डर जो स्किपुल है उसकी तरफ लेके जाना है, सो ऑब्वियसली फॉर दैट वी नीड द एल्बो flexion. So three movements they are required at the reaching up behind the back. This is the shoulder. उसको सबसे पहले हम पीछे लेके जाएंगे, फिर इसके बाद जो हम इंटरनल रोटेशन करेंगे, इंटरनल रोटेशन के बाद फिर हम एल्बो को फिक्स करेंगे, तो द पेशेंट जो है ये अपनी इंफीरियर एंगल जो लोअर एंगल ऑफ द स्किपुला है इसके तरफ उसका हाथ जो है पहुंच जाएगा, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज द रीचिंग अप। रीचिंग अप जो है ये जो एल्बो फ्लेक्शन हो जाती है, इसके बाद जो तम है ये टुवर्ड्स द लोअर एंगल ऑफ द स्किपुला की तरफ पहुंच जाता है, इसको कहते हैं द रीचिंग अप एंड बिहाइंड द बैक, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल रोटेशन, सो दैट इज नोन एज द, इसको समटाइम्स सिंपली कहा जाता है बिहाइंड द बैक, यानी BTB भी सिंपली इसको कहा जाता है, या रीचिंग अप बिहाइंड द बैक भी कहा जाता है। समटाइम लिटरेचर में उसको हैंड बिहाइंड द बैक मूवमेंट भी कहा गया है, यानी HBB, हैंड बिहाइंड द बैक, हैंड बिहाइंड द बैक, जबकि इसका अपोजिट जो है दिस इज हैंड अप द ऑन द हेड से, जहां पे हम एक्सटर्नल रोटेशन चेक करते हैं। तो ओवर द हेड अगर हम इसको रख देते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन चेक करते हैं, और अगर बैक पे हैंड को रख देते हैं तो हम इंटरनल रोटेशन चेक करते हैं। सही। The humeral head rotates internally in the glenoid cavity, and the scapula reaches its end limit of the available ranges. So this is actually the reaching up behind the moment. This is अक्सर पेशेंट जो है इतनी ज्यादा नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इफ द पेशेंट इज विद द सबक्यूमेन सिंड्रोम, तो वो अपनी जो लोअर स्किपुला है यहाँ तक भी जो है अपना हाथ नहीं लेके, और जैसे वो इंटरनल रोटेशन करते हैं उसका पेन इंक्रीज होता है, और रीचिंग अप जो है वो नहीं कर सकते। और इसको फिर अगर नहीं कर सकता पेशेंट रीचिंग अप या इंटरनल रोटेशन नहीं कर बिकॉज ऑफ द पेन, सो देन वी कॉल इज द ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट, या इसको GERD कहा जाता है। एक होते GERD, वो एक GIT डिसऑर्डर है जिसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, वो अलग चीज है। ये GERD जो है ये GIRD है, दिस इज द ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट। They are the consistent problems seen during the examination of the world athletes. The deficit in the internal rotation are attributed to the tight posterior capsule. ये तो already हम discuss कर चुके हैं। Reaching up behind the back is an important functional movement, and difficulty in this movement is the frequent complaint among the patient with the subacromial impingement syndrome. Isolated ecto-internal rotation or extension of the shoulder is often pain-free in most of the impingement cases. Combination of these movements in the reaching up behind the back nearly always produce interior shoulder pain. The tightness in the capsule and its adhesion with the fascia is probably allowing the uniplanar movement, but opposes the torsional stress combined with the pathological movement, which is actually present here in the reaching up behind the back movement. So the consequences, obviously, if the patient ये जो GERD अगर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ये सारी कंडीशन जो है ये प्रेजेंट होती हैं, so the consequence will be the abnormal, yeah, we can say that the incomplete movement of the scapula, the abnormal movement of the scapula, which is called as the scapular dyskinesis. And scapular dyskinesis will be discussed in the next session. So thank you so much, and we will continue to the next session in which we will discuss the scapular dyskinesis, types of dyskinesis, and then we will just move towards the second pathway, which is the equilateral cuff insufficiency.